Hello everyone, our today's topic is extraction in orthodontics. Now, what are the various reasons for extracting a tooth? It is to relieve crowding, to correct the antero-posterior arch relationship, to correct vertical problems, abnormal form, size and position of teeth, for supernumerary tooth, to prevent the symmetry, and then surgical corrections of jaw deformities. So first of all, for relief of crowding, the discrepancy between tooth material and available arch length cause crowding in the individual arches, which can be alleviated by extraction of teeth. So analysis of tooth size arch length discrepancy should be done prior to extraction, and excess of tooth material or deficient arch length, it results in crowding. Next is for the correction of antero-posterior dental arch relations. अब देखो, in class 2 malocclusion क्या होता है, either upper first premolar alone or upper first and lower second premolar are extracted as in camouflage treatment. Now, why does this happen? First of all, upper first premolar. What is class 2 malocclusion? class 2 में mandible जो है वो distally positioned होता है, maxilla जो है वो anteriorly. अब हम लोग अब देखो, अगर फर्स्ट प्रीमोलर निकालेंगे तो क्या होगा और सेकंड प्रीमोलर निकालेंगे तो क्या होगा. अगर हम लोग फर्स्ट प्रीमोलर रिमूव करते हैं तो जो फर्स्ट प्रीमोलर के एंटीरियर टूथ है उसको ज़्यादा स्पेस मिलेगी टू रेट्रोक्लाइन, एंड देन जो उसके पोस्टीरियर टूथ है लाइक सेकेंड प्रीमोलर मोलर, उनको कम स्पेस मिलेगी कि वो ईजिली मूव करें. मतलब एंटीरियर टूथ ज़्यादा स्पेस लेंगे और डिस्टली मूव करेंगे. अब अगर हम सेकेंड प्रीमोलर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें एंटीरियर टूथ को कम स्पेस मिलेगी, बट पोस्टीरियर टूथ जो उसके एक्सट्रैक्शन स्पेस के नियर है उनको ज़्यादा स्पेस मिलेगी. ठीक है. अब क्लास 2 मालोक्लूजन है, उसमें मैक्सिला इज प्रोग्नाथिक एंड मैंडिबल रेट्रोग्नाथिक. तो या तो हम खाली अपर फर्स्ट प्रीमोलर एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि एंटीरियर टूथ अपर एंटीरियर्स को ज़्यादा स्पेस मिले ताकि वो डिस्टली मूव कर सके, और अपर फर्स्ट प्रीमोलर एंड lower second premolar for a camouflage treatment. Okay, then in class 3 malocclusion there is extraction of lower premolars alone. क्यों? क्योंकि क्लास 3 में देर इज मैंडिबुलर प्रोग्नाथिज्म, मैंडिबल आगे प्लेस्ड होता है. सो कैमोफ्लेज ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग खाली लोअर प्रीमोलर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और अपर सेकेंड एंड लोअर फर्स्ट प्रीमोलर एज इन कैमोफ्लेज. Now, antero-posterior problems include what? Increased overjet, reverse overjet, class 2 or class 3 molar relationship. Next is abnormal form, position and size of teeth. Conditions like deformed teeth, they interfere with normal occlusion. And next is tooth with dilacerated root may not erupt into the occlusal position. So impacted teeth which is unfavorably positioned, that also has to be extracted. Now what are the choices of teeth for extraction? See, upper incisor rarely extract करेंगे. कब करेंगे? जब वो grossly decayed हो, impacted हो, unerupted हो, dilacerated हो. Lower incisors, it is extracted only in cases of extreme bone loss when the canine is tipped distally, and then in cases of totally locked incisors with otherwise normal occlusion. Now what are the drawbacks of lower incisor extraction? It can lead to collapse of the arch, deepening of the bite and lower tipping of the lingual tipping of the lower incisors. अब कैनाइन ये कब इरप्ट होगा, कब एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको? जब वो अनफेवरेबल इम्पैक्शन हो या फिर एक्टोपिक इरप्शन हो रहा हो. देन फर्स्ट प्रीमोलर जो है, इट इज़ द टीथ ऑफ चॉइस फॉर एक्सट्रैक्शन फॉर क्राउडिंग करेक्शन एंड ओवरजेट रिडक्शन. सेकेंड प्रीमोलर इन मिनिमल डिस्क्रिपेंसी केसेस, hypoplastic condition, grossly decayed and impacted. Now first molar, it is indicated only when the prognosis is bad. Second molar,
फर्स्ट मोलर कब, जब प्रोग्नोसिस इज बैड. सेकेंड मोलर जब क्राउडिंग इज प्रेजेंट डिस्टल टू द फर्स्ट मोलर. And for the distalization of first molar, extraction of third molar is not useful for the orthodontic therapy. Now, what are the various techniques of extraction? See, first of all, what is therapeutic extraction? Teeth that are extracted for orthodontic correction. Then the type of extraction is known as therapeutic extraction. So, इसके techniques क्या क्या हैं? Wilkinson's technique, balanced extraction, Stobies extraction, compensating extraction, serial extraction, driftodontics, and camouflage treatment or camouflage extraction. First of all, Wilkinson's. अब Wilkinson's technique में क्या बोले हैं? Extraction of first 4 permanent molars before the age of 8.5 and between the age of 8.5 और 9, मतलब 8.5 से 9.5 साल के बीच में चारों फर्स्ट परमानेंट मोलर्स को हम लोग रिमूव कर देंगे. इट इज इंडिकेटेड व्हेन द चिल्ड्रंस आर मोर प्रोन फॉर केरीज. एंड एडवांटेजेस क्या है? इट प्रोवाइड स्पेस फॉर थर्ड मोलर्स एंड रिलीफ ऑफ क्राउडिंग. प्रोबेबिलिटी ऑफ केरीज इज रिड्यूस्ड टू रिमेनिंग टीथ सिंस देयर इज नो क्राउडिंग. इफेक्टिव ओरल हाइजीन इज पॉसिबल. Next, disadvantages, it offers little space for elevation of crowding in anterior region. The position of second and third molar varies, often वो rotate हो जाते हैं. और mesial tipping होती है second molar की, जिसकी वजह से improper proximal contact होता है and leads to food accumulation and periodontal problems. So Wilkinson ने क्या बोला? चारों first permanent molars का age of 8.5 to 9.5 years extraction. Anchorage for the tooth movement is also lost because of this. Next is balanced extraction. तो balanced extraction क्या है? Removal of teeth symmetrically on each side of the arch. अब देखो, extraction अगर एक side कर रहे हैं हम लोग, extraction of tooth on one side of the arch, then what would happen? The remaining teeth would move forward in the extraction space. जो teeth remaining है वो extraction space में move कर जाएगी. अब जो teeth distal है to the extracted space वो mesially move करेगी और anterior जो teeth है वो across the arch move करती है, जिसकी वजह से arch में asymmetry हो जाती है. And to prevent such asymmetry, extractions has to be balanced. Now see, this is balanced extraction and unbalanced extraction. Now what is happening here is, first of all, see the balanced unbalanced extraction. Here there is crowding present in the lower anterior region. Okay, so what is there? There is crowding in the lower anterior region. Now what we are doing, we are carrying out unbalanced extraction of lower 6. So what is happening? The anteriors, they are moving across the arch. See, anterior tooth, they have moved across the arch and there is mesial tipping of the second molar. Okay. Now if we are carrying out balanced extraction, so what is happening if balanced extraction is carried out? See, we are extracting upper 6 and lower 6 both in balanced extraction. What is happening now? Because of balanced extraction, to maintain the cusp fossa relationship, क्या होता है? स्पेस जो है वो अपर और लोअर इंटीरियर और पोस्टीरियर टीथ इक्वली ऑक्यूपाई करते हैं. इनकी जो ड्रिफ्टिंग है वो नहीं होती है मीजियल, ना तो मीजियल ना तो डिस्टल. सो ड्रिफ्ट भी नहीं होता है और स्पेस लोग अच्छे से ऑक्यूपाई करते हैं. एंड नेक्स्ट इसमें क्या होता है? across the arch movement is not taking place. So this is it about balanced extraction.
Now next is compensating extraction. So compensating extractions में extraction is carried out in opposite arches to maintain lateral symmetry. Compensating extractions, they preserve the inter-arch relationship. Next is Stobies extraction. Extraction of two premolars at the same time, that is Stobies. Multiple extraction, extraction of many teeth. See, occasionally extraction of 4 teeth, that is first premolar, does not give enough space to treat the orthodontic problem, so extraction of 1 more teeth may be indicated, but such situations are rare and they are not advised. Next is serial extraction. So here there is extraction of certain deciduous and permanent teeth to elevate the crowding. Serial extraction में क्या है? The usual sequence of serial extraction is CD4. Means first of all we will remove primary canine, then primary first molar, that is D, and then the first premolar, which is 4. तो CD4 ये है normal sequence of serial extraction. यूजुअल सीक्वेंस मतलब इसमें डेसिडुअस टीथ और परमानेंट टीथ को हम लोग इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं कि जो इरप्टिंग टीथ है उनमें क्राउडिंग ना प्रेजेंट हो. नेक्स्ट क्या है? ड्रिफ्टोडोंटिक्स. सो ड्रिफ्टोडोंटिक्स क्या है? हम लोग आफ्टर एक्सट्रैक्शन कोई भी एक्टिव ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नहीं देते हैं टूथ को. दे क्लोज द स्पेस बाय मीजियल एंड डिस्टल ड्रिफ्टिंग ऑफ द टूथ. ठीक है. After extraction of lower first premolar, crowding settles automatically by distal tipping of the incisors into the extracted area. Next is extraction in camouflage treatment. This we have studied already in the methods of gaining space, that in class 2 either upper first premolar would be extracted or lower second along with upper first lower second भी extract होगा. और क्लास 3 में either lower premolars or upper second and lower first are extracted as a camouflage treatment. So now once again let us see what are the various techniques. First of all it is Wilkinson's technique. Wilkinson ने क्या बोला? 8.5 से 9.5 years के बीच में we need to extract all the first permanent molars. ये किन में करते हैं? जिनमें उन बच्चों में जिनमें कैरियस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है. नेक्स्ट है बैलेंस्ड एक्सट्रैक्शन. इसमें क्या है? सिमेट्रिकली हम लोग को रिमूवल करना है ऑन ईच साइड ऑफ द आर्च. सिमेट्रिकल रिमूवल ऑफ टीथ ऑन ईच साइड ऑफ द आर्च. Next is Stobies extraction, means removal of extraction of 2 premolars at the same time. Next is compensating, extraction of teeth carried out in opposing arches, that is compensating. Serial extraction, what is the normal sequence of serial extraction? It is CD4. Means deciduous और कुछ permanent teeth का extraction ताकि जो erupting permanent teeth है वो normal occlusion में erupt हो. Then is Driftodontics, means after extraction हम लोग कोई भी active orthodontic therapy नहीं देंगे. जो tooth है वो mesially और distally drift होकर space closure करेंगे. Next है Camouflage treatment, जिसमें class 2 malocclusion में upper first and lower second का extraction होता है, whereas in class 3 it is upper second and lower first. So this is it about extraction in orthodontics, which is also a method of gaining space with the reduction of tooth material. So thank you, keep visiting.